Hello, my name is Nikesh Soni and my roll number is 2K20ME174 and my topic is the propeller turbine. Propeller turbine is a type of inward flow reaction turbine with a propeller shaped runner which can be seen in ships and submarine. It is equipped with either fixed or adjustable blade. In the propeller turbine, the water flow is regulated by adjustable guide vanes. The vanes move the water into the runner to transfer its energy to the blades. The propeller turbine is usually employed in hydraulic sites with high flow rates. Most reaction turbines are propeller type. The propeller turbine runner generally has 3 to 6 blades, to which water strikes continuously at a constant rate. The blade pitch may be fixed or adjustable. The main component of a propeller turbine are the runner, a scroll case, wicket, gates, and the draft tube. The flow direction is axial for most propeller turbine, parallel to the axis of rotation. They are therefore categorized as mid-flow turbine. Early development used propeller turbine units with vertical shaft. More recent development utilize a horizontal shaft. The blade of a propeller turbine can be rigidly attached to the hub called third blade runner. The runner blades can also be built adjustable so that the turbine can work more efficiency in a wide range of flow condition. Propeller turbines are designed for heads of 1.5 to 60 meters but are usually used for head less than 30 meters. In a fixed blade propeller turbine, the range of flow operations is better to be between 75 and 100% of the best efficiency point. Kaplan turbine may operate between 25 and 125% of the best efficiency discharge rate. The head range for the equated performance of the turbine is from 20 to 140% of the design head. Thank you. Good evening, everyone. Welcome to this session. Myself Nimish of batch M3 and my roll number is 2K20ME175. Today we are going to discuss about Kaplan turbine, its characteristics and its components. And at the last, we are going to discuss and analyze the inlet and outlet velocity triangles of its runner. So, let's get started. As we know, there are two types of turbine. Number one, impulse turbines and reaction turbines. In impulse turbines, the kinetic energy of the fluid is taken into consideration, and in reaction turbines, the kinetic energy as well as the pressure energy is taken into consideration. So Kaplan turbine here is a reaction turbine. The name Kaplan has been named after an Austrian scientist named V. Kaplan. Moving on, axial flow. This Kaplan turbine is an axial flow turbine, which means the flow of the water is axially to the runner. Moving ahead, it is a low head operating turbine, which values differ from 10 meter to 30 meters. It is an high discharge turbine because a huge amount of water is used in this particular turbine. It has a specific range of 260 to 900. Now we are going to discuss about its components. As you can see, this is a runner. This is the shaft of the runner on which these vanes are mounted at a certain angle. Usually there are 4 to 6 vanes mounted over this runner so that in order to reduce the friction and other losses. The lower the vanes, the lower number of vanes, the lower will be the friction. Now these vanes can be adjusted
over this runner from in the upward and downward direction, as well as this angle theta can be changed. Now, the axial flow turbines with fixed number of blades are called propeller turbines. Coming down here, we have scroll casting, which is the first component, which this is a spherical kind of a shape, or circular if you look in 2D. Then we come across guide vanes. Now what is the function of guide vanes? The guide vanes guides the direction, or you can say it gives the direction to the flow of water and controls the flow of water. Moving ahead, we have when the this water hits the runner in an axial manner, this runner rotates and then the water moves to the draft tube. This is a very important component of Kaplan turbine system. A draft tube is kind of a diffuser which increases the pressure by reducing the velocity. So here, first of all, the water comes in to the runner with high kinetic energy, which means high velocity, and then this tube suddenly expand, thereby creating the high pressure and reducing its velocity, and then discharging that water into the other water body source. Now moving ahead, we have the inlet and outlet velocity triangles. Here are some notations that we are already aware of, where capital V is taken as the absolute velocity, U is the peripheral velocity at any radial distance, VR is the relative velocity, alpha is the guide vane angle. Now guide vane angle is the angle made by the peripheral velocity in the positive direction with the absolute velocity. Beta is the blade angle, which is the angle made between the relative velocity and the negative direction of peripheral velocity, that is u. This is a runner that we have, and these are the inlet and outlet velocity triangles. As we can see, the angles between the absolute velocity at the inlet v1 and the peripheral velocity u1, which is always same, u1 is equals to u2 and is taken as u. The angle between them is alpha 1, and the angle between the relative and the u in the negative direction is beta 1. As the flow that comes out of the Kaplan runner is axial, that is, it comes at 90°, therefore the alpha 2 that we have got is 90 degrees. Euler head. Now we know that the Euler head formula is given by VU1, that is the tangential component of absolute velocity, into U1 minus VU2, which is the tangential component of absolute velocity at the outlet, into U2 divided by G. As VU2 is 0, cause this is an axial flow, therefore alpha 2 is equal to 90, thereby making the tangential component
0. Now, the hydraulic efficiency is given by the Euler head divided by the net head, which gives us this particular formula, that is VU1 into U1 divided by GH. That is all. That is it for today. Thank you for viewing this video. Have a good day. So hi everyone, my name is Nimish, roll number 2K20 ME176. So now let's discuss about draft tube. So this is a draft tube in front of you. So this is a turbine. Section 1 is the turbine outlet, and this is the outlet of the draft tube, and this level is the tail race level. So now what is the function of the draft tube? So the function of the draft tube is to create a negative pressure head at the outlet of the turbine, so as to increase the overall head of the turbine, and also it helps in converting a lot of kinetic energy, a kinetic head into pressure head. Otherwise it would just go waste into the tail race. So let's look at some mathematics to how it helps in creating a negative pressure head in section 1 so as to increase the net head on the turbine. So if you apply the Bernoulli equation in between these two sections, so from the outlet of the draft tube, the lowest point of the draft tube, till the tail race level, the height is y, and this is the height of the from the outlet to the level of the tail race, that is hs. So we apply the Bernoulli's equation, I get p1 by rho g plus p1 square by 2g plus which is hs plus y as your. So this we are choosing the outlet of the draft tube as a reference, which becomes equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus some frictional head loss. If you look P2 by rho g by pressure head at this section, this is nothing but the sum of the atmospheric pressure head, that is on the tail head, plus pressure head due to this depth. So I would say P2 by rho g plus equals to PA by rho g plus y. Okay, so this is your P2, and I will put it over in the equation 1. I'll get P1 by rho g plus V1 square by 2g plus hs plus y is equals to Pa by rho g plus y plus V2 square by 2g plus hf. I can get rid of y from here, and the value of P1 by rho g would be Pa by rho g minus, this would go there, it would become V1 square by 2g minus V2 square by 2g, and then also minus hf, and this would go over there, and this will become plus hf hs. So if you look at this equation, it clearly shows that your pressure head at section 1 is less than the atmospheric pressure. So we can say P1 is less than Pa. So this is how draft is helping us to create negative pressure over here to increase the overall head of this turbine. Okay. So this is pretty much what is the mathematic of the draft tube is.
So what is the meaning of the efficiency of the draft tube? The efficiency of the draft tube means that is denoted by the neta d, that is equals to actual conversion of kinetic head into pressure head divided by theoretical conversion of kinetic head. So if you look at this part of the equation, which is this much, this is the actual conversion of kinetic head into pressure head. So I would say that eta d actual becomes v1 square by 2g minus v2 square by 2g. This is minus hf. So this is the actual conversion of the kinetic head into pressure head. The theoretical would be there will be no friction losses. You will have v1 square by 2g minus v2 square by 2g. This is theoretical efficiency, by because we are neglecting friction here. This is actual. And so I hope you have understood this mathematics behind the draft tube. Now let's move on to some numerical applications of draft tubes, and let's see some basic numericals. Okay, so this is our problem of our draft tube. In this, we have a look at this. A water turbine has a velocity of 6 meter per second at the entrance of the draft tube. So over here velocity would be 6 meter per second, and the velocity of 1.2 meter per second at the exit. You would have then the friction losses of 0.1 meter and a tail water of 5 meter below the entrance to the draft tube. So this is the entrance of the draft tube. You have tail race below the 5 meter to it. Find pressure head at the entrance. You have to find out P1 here. P1 by rho g. So let's apply the concept of Bernoulli's equation again. So you have V1 as 6 meter per second, V2 as 1.2 meter per second. Then we have the frictional losses, which is 0.1 meters of water. Then we have HS, that is 5 meter. We don't know the value of y over here. Okay, so y as it is will get cancelled. So if you start with the application of Bernoulli's equation, you get this P1 by rho g plus v1 square by 2g plus hs. So you will get pa by rho g plus v2 square by 2g plus hf. So y is gone. So let's start. You have p1 by rho g is equals to pa by rho g minus, we will get v1 square by 2g minus v2 square by 2g minus hf, and this will be minus or plus hs. So this is what you get after applying Bernoulli's equation in between these two sections, these two. So you know the value of V1, you know the value of V1, V2, HF, HS, put it. So the question will arise that depending upon the value of the atmospheric pressure
that you choose, your value of P1 will, pressure head would be according to that. So usually if you find out, you write down this PA by rho G is equals to 10.3 meters of water column. You put this value into this place, you would get absolute pressure head at section 1. Absolute pressure head. But we put usually PA by rho G as 0. This value that will get, we'll call it vacuum head. When you put that 0, so P1 by rho G would come out to be minus 6.6 meter of water column. That is the pressure head at entrance of the draft tube. So make sure you choose these two values, very carefully, because whichever value you choose, it will give a different answer. Alright, so now let's end this and hope you guys understand draft tube very well. So thank you. Hello, my name is Nimit Khurana and my roll number is 2K20 ME177 and my topic is governing of Kaplan turbines. So Kaplan turbine is basically an axial flow turbine only, right? So governing of a Kaplan turbine is different from that of a Francis turbine, है ना? It is because it has the double control of turbine operation to meet the needs of the part load, and also we can say that it has double regulation. Double regulation type किस तरीके से हम ये चीज़ समझा सकते हैं कि इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गाइड वेन्स एंड द रोटेशन ऑफ रनर वेन्स, ठीक है. तो इसीलिए डबल रेगुलेशन है. देयर इज मूवमेंट ऑफ गाइड वेन्स एज वेल एज देयर इज रोटेशन ऑफ द रनर वेन्स, एंड इसमें दो सर्वो मोटर्स होती हैं एंड दोनों का अलग अलग काम है. बेसिकली एक गाइड वेन्स को कंट्रोल करेगी, दूसरी जो है वो हमारी रनर वेन्स को कंट्रोल करेंगी. देन देयर इज अ पिस्टन. पिस्टन क्या है? सर्वो मोटर पे एक बेसिकली सर्वो मोटर का एक पिस्टन है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू एन ऑपरेटिंग शाफ्ट. ऑपरेटिंग शाफ्ट से वो कनेक्टेड है एंड इट्स पासिंग थ्रू द हॉलो शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन. एंड इसमें क्या है कि जो इसका अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, इसका जो अप एंड डाउन मोशन है बेसिकली ऑपरेटिंग शाफ्ट का टू द रनर वेन्स, है ना, इट इज़ बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ क्रैंक, लिंकेजेस, क्रॉस हेड. इन सब की वजह से ये सब हो पा रहा है पॉसिबल. एंड मूवमेंट ऑफ द रनर वेन्स एंड द गाइड वेन्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. बेसिकली क्या है कि साइमल्टेनियसली लाइक साथ में हमारे हो रहे हैं. तो जो हमारे गाइड वेन्स हैं और जो रनर वेन्स हैं, इनकी जो मूवमेंट हो रही है वो साथ साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है. ये भी हो रहा है एंड ये भी हो रहा है. देन कैप्लन टर्बाइन बेसिकली हाई एफिशिएंसी होती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस. तो इसीलिए वो अलग अलग लोड्स, अलग अलग है, बेसिकली हर लोड पे ही उसकी हाई एफिशिएंसी होती है बिकॉज ऑफ these reasons only. Okay, so now I'll be explaining the blade control valve or the combinator and operation जो है blade control valve का. and blade control valve का basically जो guide vanes हैं and हमारी जो runner vanes हैं, इनका हमें साथ में ऑपरेशन करना है like simultaneously. and इसमें जो best possible combination है, ये चीज़ अचीव करना is a very very difficult task. and इसीलिए हमारे जो part load है उनकी भी बहुत ज़्यादा like specific demands है and इनके लिए you can say a special equipment is needed. and जो mechanism है for controlling and basically maintaining this स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है, बहुत स्पेसिफाइड रिलेशनशिप है बिटवीन दी रनर वेन्स एज वेल एज दी गाइड वेन्स. इसको हम कहते हैं ब्लेड कंट्रोल वाल्व और दी कॉम्बिनेटर, ठीक है. तो इसमें हम एक चीज़ कह सकते हैं कि देयर इज अ कनेक्शन. इसमें कनेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइक कैम with linkages that connects the combinator to the blade servo motor and the guide vane servo motor. तो combination किसका है? combination basically cam with the linkages and the it connects the combinator with the blades of the servo motor and the guide vanes of the servo motor, ठीक है. and इसमें एक चीज़ है कि there are like combinations जो हमारे पास अल्फा एंगल है विच इज़ द गेट ओपनिंग एंगल एंड देयर इज द बीटा एंगल विच इज़ द ब्लेड एंगल. एंड बेसिकली कुछ पर्टिकुलर हमें पावर चाहिए तो फॉर अ गिवन पार्ट लोड उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ वेरी करेंगी अल्फा की एंड बीटा की. तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के लिए अल्फा का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा जो कि बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी दे सकता है पार्ट लोड को, उसके लिए इनकी एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू होती है. एंड हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा है और जो बीटा है, अल्फा वाज द अपना गेट ओपनिंग एंगल एंड बीटा वाज द ब्लेड एंगल. इनका जो यूनिक वैल्यूज़ है, इनका जो रिलेशनशिप है, एंड ये
कवरिंग द इंटायर रेंज, जो भी हमारा पूरा फंक्शन ऑपरेशन हो रहा है उसकी जो इंटायर रेंज को ये कवर करता है। तो ये जो ऑप्टिमम एफिशिएंसी हमें देता है, इसको हम कहते हैं कैम रिलेशनशिप। थैंक यू। Hello. In this video, we are discuss about analysis of Kaplan and propeller turbine. The first topic is 3.4 analysis of axis flow turbine. I've created a sketch. Let's discuss about this first. Now, the sketch is this. This is the sketch of the Kaplan and propeller turbine. Mainly the Kaplan and propeller. The main difference about this is in Kaplan turbine there is an angle change in a moving blade, and and the one more thing is that in Kaplan turbine efficiency is good, and in on other side of propeller turbine there is no angle change on the moving blade. This is the major difference. So in this diagram, firstly discuss about this is the guide and the fixed vane. They are fixed. They are not moving vanes. This is the shaft which is moving with the angle omega. This is casting, and the in the inner photo we are seeing the moving vane that are moving. The first are fixed and the second are moving. And this is the hub. In Kaplan and propeller turbine there is a hub, or we can also known as boss. The diameter of the hub is dB. And the diameter of the moving vane that is moving in the Kaplan turbine, that is D, capital D. And the just a minute, yeah, in the diameter which we are finding, that is denoted as D naught, and this is known as draft tube, in which all the water is drafted. This is the tail race, head race. Okay, yeah. And now coming to our topic, analysis. We have seen the diagram of Kaplan turbine. Now the diameter also we all discuss about this. Yeah. इस वीडियो में हम ये देखेंगे एनालिसिस प्रोसीजर ऑफ द एक्सियल फ्लो टर्बाइन। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे इजी हो जाएगा हमको डील करने में ये पूरा प्रोसीजर। एंड दैट ये रहा डायग्राम। हमने घर पे सीलिंग फैन देखा होगा, ये टोटली उस जैसा ही है, बहुत मतलब उससे सिमिलर है। उससे हम अपने माइंड में रखेंगे सीलिंग फैन से, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा सब कुछ सोल्व करने के लिए। फर्स्टली इसका डिजाइन देखते हैं हम स्टार्ट करने से पहले। ये ऊपर जो ये है, ये शाफ्ट पावर है। यहाँ से हमें पावर आउटपुट मिलता है। वो जो शाफ्ट से यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल शाफ्ट से नीचे जुड़ा हुआ है, इसको हब बोलते हैं। हब और हब बोल लो या बोस बोल लो, एक ही बात है। हब और हब से जो बिल्कुल यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये इसे बोलते हैं मूविंग वेन। ये मतलब घूमती है, मतलब फिक्स्ड नहीं है, मूविंग वेन है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिक्स्ड नहीं है, मूविंग वेन है, इसलिए इसका मूविंग वेन बोल लो, ब्लेड बोलो, ठीक है। और एक और बात मैं बोलूंगा, इसका जो डिफरेंस है कैपलर और प्रोपेलर में, एक यही डिफरेंस है कि कैपलर में एंगल चेंज हो जाता है इसका मूविंग वेन का। इस मूविंग वेन का एंगल चेंज होता है, और इसकी एफिशिएंसी भी हम बोल सकते हैं कि गुड है। मतलब इस कैपलन की बता रहा हूं मैं, कैपलन की एफिशिएंसी गुड है। और उसके दूसरे साइड में देखेंगे प्रोपेलर की, उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, और इसमें एंगल चेंज नहीं होता है। ये जो मूविंग वेन का एंगल है, ये चेंज नहीं होता है। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे कैपलन के, उसमें इसका एंगल नहीं चेंज होएगा। और अगर उसमें एंगल चेंज हो रहा है तो वो क्वेश्चन है प्रोपेलर का, हम ध्यान रखेंगे, और वो एंगल दिया होगा हमेशा। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। और जो ये मूविंग वेन है जो बिल्कुल हब से अटैच हुई है, और इस मूविंग वेन का मैंने आपको बता दिया है। अब है जो ये फिक्स्ड वेन, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे ये मूव नहीं होती। यहीं से हम डिसाइड करेंगे इनलेट एंगल, और आउट यहाँ से, मतलब कि यहाँ से ही पानी आएगा। और ये यहाँ पे कास्टिंग है जहाँ से पानी आता है। तुम देख रहे हो कि ये छोटा है, ये बड़ा है।
यहाँ से, क्योंकि एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा है, क्योंकि हमें प्रेशर को मेंटेन रखना है। यहाँ से छोटा रखा हुआ है, यहाँ से बड़ा रखा हुआ है, क्योंकि ये दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि हमें प्रेशर को मेंटेन रखना है। ठीक है, एक बार और बताता हूँ। ये शाफ्ट से पावर आउटपुट निकलता है, शाफ्ट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हब के यहाँ से हब और उसको बोस बोल लीजिए, एक ही बात है। उस हब से बिल्कुल जुड़ी हुई है मूविंग वेन, जो मूव करती है। और यहाँ से ये कास्टिंग है, ये दो जो सर्कल देख रहे हैं, एक छोटा बड़ा, ये कास्टिंग, यहाँ से पानी आता है। ये जो यहाँ से ये है फिक्स्ड और गाइड वेन्स, ये मूव नहीं करती। यहाँ से हम डिसाइड करते हैं इनलेट एंगल। ये शाफ्ट से पावर आउटपुट हम लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ से एक बात आई, ये ड्राफ्ट ट्यूब है। यहाँ से देख लीजिए, इसके बाद जितना भी यहाँ से पानी हाँ, यहाँ से जितना भी पानी निकलेगा, देखो यहाँ से पेन रखा हुआ है, इससे नीचे जितना पानी आया, ये ड्राफ्ट ट्यूब है। ओके, तो जो हब का डायमीटर है वो डीबी से डिनोट करेंगे, डीबी हब डायमीटर। और डी नोट है मूविंग ब्लेन का डायमीटर, जो मूव कर रही है ब्लेन। और डी हमने जनरली रखा हुआ है क्वेश्चन में, जहां से उसने पूछेंगे उसके हिसाब से हमने डी यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। क्वेश्चन में हमें ये कि यहाँ से एक पॉइंट दिया जाएगा कि यहाँ से वाटर निकला है। ठीक है, ये सिंपल, ये समझ आ गया होगा। और ये टेल रेस है, ये हेड रेस है, इतना तो हमें पता ही है, टेल रेस हेड रेस। ओके, नाउ इसमें कैप्लन और प्रोस्पेलर में इसका U इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी नो दैट U मतलब R, इसमें R हमेशा सेम रहता है, क्योंकि हब से जो डायमीटर है वो बिल्कुल सेम है दोनों का। ठीक है, इसलिए U1 इज इक्वल टू U2 होता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट U इज इक्वल टू पाई डी एन अबाउट 60। तो इसमें U1 U2 सेम होता है। एंड दी अदर वन हम डिस्कस करते हैं एरिया फ्लो। एरिया फ्लो होता है वाटर फ्लो इन द क्रॉस सेक्शन एरिया। वी नो दैट डिनोटेड बाय AF। इसका होता है पाई बाय 4 डी नोट स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। डी नोट मैंने आपको बता ही दिया है, डी नोट मूविंग वेन का एंगल है, मूविंग वेन का डायमीटर है। और DB डायमीटर ऑफ हब और बोस बोल लीजिए। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है, एरिया फ्लो इनलेट पे और आउटलेट पे बिल्कुल सेम हो होगा। दोबारा बताता हूँ, इनलेट और आउटलेट पे एंगल्स जो इसका एरिया फ्लो होगा बिल्कुल सेम होगा। तो अब आप डिस्कस करते हैं डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज डिनोटेड बाय Q और AF1 VF1 इज इक्वल टू AF2 VF2। तो यहाँ से एक बात और हमने पीछे भी डिस्कस किया था, एरिया फ्लो AF1 इज इक्वल टू AF2 था। तो यहाँ से VF1 और VF2 इक्वल हो जाएंगे। समझ आ गया? तो यहाँ से एक बात हमें क्लियर हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने निकाली है, VF1 इज इक्वल टू VF2। नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VF1 इज इक्वल टू VF2। अब हम इसका डिस्कस करते हैं वेलोसिटी डायग्राम। जस्ट अ मिनट, हाँ ये वेलोसिटी डायग्राम है। यहाँ से वाटर इनलेट हो रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है। 1 इनलेट पॉइंट है, 2 आउटलेट पॉइंट है। ओके, आई एम डिस्कसिंग, जस्ट अ मिनट, गिव मी या हाँ, मैंने अभी आपको बता दिया था U1 U2 इसमें सेम होगा, क्योंकि इसमें जो R है U इज इक्वल टू R ओमेगा। जो R है वो हब से इनलेट और आउटलेट में बिल्कुल सेम है। ये नोट कर लीजिए, U1 U2 क्यों सेम है, क्योंकि जो हब से उसका डिस्टेंस है R वो बिल्कुल सेम है, इनलेट पे भी और आउटलेट पे भी। ठीक है, तो U1 इज इक्वल टू पाई एन डी बाई 60 होता है। D यहाँ से जो D होगा, देखो ये D, ये जो D है, ये हम वो डायमीटर लेंगे जहां से हमें सोल्व करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में। ये नोट कर लीजिए, D हम वो डायमीटर लेंगे जहां से हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोलेगा। तो ये है इनलेट, यहाँ से इनलेट, ये 1 पॉइंट इनलेट है, 2 पॉइंट आउटलेट है। यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है, ये पता होगा। ये वेन है, ये वेन बनाई हुई है, यहाँ से U1 U2 सेम है। सो फर्स्टली यहाँ से पानी जाएगा, ये एंगल अल्फा, ये U1, यहाँ से ये VF1, और ये जो यहाँ से दिख नहीं रहा है VF2 है, सॉरी VW1 है,
व्रील वेलोसिटी एट इनलेट, ये व्रील वेलोसिटी एट आउटलेट, यहाँ से ये यू तो हमें सेम रहेगा, बता दिया है। यहाँ से जब पानी जाएगा आउटलेट जहाँ से निकलेगा, VF1 हमने डिस्कस करा अभी थोड़ी देर पहले, VF1 इज इक्वल टू VF2 होगा, VF1 इज इक्वल टू VF2, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, यहाँ से ये VR2 रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, V2 VF2, ओके, व्रील वेलोसिटी यहाँ से इनलेट की और ये आउटलेट की, ठीक है। अब इस पर डिस्कस करते हैं कि वर्किंग प्रोसेस। पहले ज़्यादा टाइम का नहीं है, थोड़ी देर का, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कंसीडर एक कैप्लन टरबाइन है, उसका नेट हेड है वो H, नेट हेड H माना गया है, N रोटेशन पावर इन RPM है, पावर RP जो है या P बोल लीजिए, पावर जनरेटेड बाय द शाफ्ट, N स्पेसिफिक स्पीड है, B नोट हाइट है फ्लो पैसेज की एट द गाइड वेंस, D1 आउटलेट डायमीटर ऑफ द रनर है, DB आउटलेट डायमीटर ऑफ हब है। इसको ठीक है, इन एक टेबल दिया हुआ है, Z नोट नंबर ऑफ गाइड वेन, कितनी नंबर मतलब कितनी गाइड वेन्स है उसमें, 1 2 3, ठीक है। इसमें फर्स्ट है रिलेटिव गाइड वेन पैसेज, इसका फार्मूला ये इसको बोलते हैं B नोट बाई डी। B नोट हमने पहले ऊपर देख रखा हो, हाइट ऑफ द फ्लो पैसेज एट द गाइडलाइन वेन्स, और D1 D डायमीटर हो गया। इसकी रेंज होती है 0.3 टू 0.41। इसकी हम एक आगे जाके भी एक पूरा टेबल दिया है, उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा हमें जाके। सेकंड पॉइंट है रिलेटिव हब वेलोसिटी अब डायमीटर, सॉरी, DH अपॉन D1, DH वो हो गया हब का डायमीटर, और D1 डायमीटर हो गया उसका मूवमेंट का। तो इसकी रेंज होती है 0.42 टू 0.68, और इसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है वो मानी जाती है 260 टू 770। फ्लो रेशो का फॉर्मूला हमें पता ही है, दैट इज VF1 अपॉन 2GH, और VF1 इसमें VF2 के इक्वल होता है। ओके, क्योंकि कैप्लर और प्रोपेलर की बात करें। नेक्स्ट पे जाते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रेंज दी हुई है कहां से कहां तक कि कितने स्पीड पे कितने रेशो की, कितने फ्लो वेलोसिटी की, और कितने डायमीटर रेशोज हैं। ये स्पीड रेशो में पता ही है, KU वो KF था, ये KU है, स्पीड रेशो है। ये देख लीजिए, इसमें डिफरेंस आप देख लेना, फ्लो रेशो है वो KF1 है, और ये KU है। ओके, इसमें इसमें ज्यादा दोनों में बस ये एक डिफरेंस है, यहाँ पे U1 आ जाता है और वहां आ जाता है VF1। ओके, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक स्पीड होती है 260 टू 860, और इसकी रेंज हमेशा याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन सोल्विंग में इजी हो जाएगा कि अगर हमारा कुछ गलत भी आ रहा है क्वेश्चंस में, तो हमें पता है कि इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक ही होती है, तो हम इसको ठीक कर सकेंगे क्वेश्चन में। इसकी रेंज होती है 1.3 टू 2.3, इससे ना ज्यादा होगी ना इससे कम होगी, इसके रेंज में रेशो में ही होगी। इसमें साइज लिया हुआ है, डायमीटर D अपॉन अंडर नोट P इज इक्वल टू C, इतना ये है। इसके बाद एफिशिएंसी हमने देखी हुई है पहले में कि मैकेनिकल वॉल्यूम ओवरऑल और शाफ्ट की एफिशिएंसी। रन अवे स्पीड हमें पता ही है, NR अपॉन R इज इक्वल टू 0.6 NS अपॉन 1/5, ये हमने पहले भी निकाली हुई है, इसमें इतना कुछ नहीं है। NS इसमें स्पेसिफिक स्पीड है, इसमें स्पेसिफिक स्पीड ऑफ कैप्लर टरबाइन 260 टू 900 होगी। ओके, इसके बाद हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कैप्लर टरबाइन इज वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ 20 मीटर, डेवलप इतना पावर, ये शाफ्ट पावर है। देखिए शाफ्ट पावर है, उसने हेड दे दिया, दो चीज उसने दे चुकी है। द आउटर डायमीटर ऑफ द रनर इज 3.5, डायमीटर दे दिया D1, और ये हब डायमीटर दे दिया DB, और बोस डायमीटर बोल लीजिए। गाइड वेन का एंगल उसने दे दिया एक्सट्रीम एज पे 35 डिग्री। हाइड्रोलिक और ओवरऑल एफिशिएंसी ने दो एफिशिएंसी ने दी हुई है, 88 और 84, जहां से हमें डिस्चार्ज भी निकल, काफी चीजें निकलेंगी, हम देखते हैं। वेलोसिटी, व्हील वेलोसिटी उसने 0 दे दी, VW2 उसने 0 दे दी। ओके, आउटलेट पे उसकी 0 है, तो हमें पहले निकालनी है
रनर ब्लेड एंगल एट द इनलेट और एंड एग्जिट, और सेकंड निकालनी है स्पीड ऑफ द टरबाइन। अब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो हमने क्वेश्चन देखा, अब इसके आंसर पे जाते हैं हम। ये जो गिवन सब गिवन है, ये हमने सब कुछ गिवन लिख लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन कुछ भी दे, हमने उसका वेलोसिटी डायग्राम निकाल लेना है। अल्फा 35 दे रखा था और हमें इसमें कुछ पता नहीं है। इसका ये इनलेट का है, इनलेट, ये आउटलेट का है। आउटलेट में VW2 जीरो होता है, VF1 इज इक्वल टू VF2, और उसने क्वेश्चन में ये भी दे रखा है V2 इज इक्वल टू VF1, और वो VF1 तो VF2 भी, सॉरी, ओके। तो हमने इसका क्वेश्चन में निकालना है रनर ब्लेड एंगल एट इनलेट और आउटलेट पे, उसका स्पीड ऑफ द टरबाइन एन भी निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमने ये दो चीज दे रखी है, एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन इजी होएगा। फर्स्टली हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फार्मूला होता है रोटर पावर अपॉन वाटर पावर। तो रोटर पावर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, FQ VW1 प्लस VW2U, VW2 इक्वल टू 0 होती है, वो 0 हो गई। FQ कट गया यहाँ से, जी हमें पता है, H हमें पता है, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा VW1 और U1 का। इसको हम इक्वेशन 1 निकाल देते हैं। सेकंड, ये थी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की। ये ओवरऑल एफिशिएंसी की होती है शाफ्ट पावर अपन वाटर पावर। शाफ्ट पावर हमने गिवन क्वेश्चन में दी हुई है, वाटर पावर होती है FQGH। इससे यहां से हम निकालेंगे Q, डिस्चार्ज निकल के आएगा 7.1442। डिस्चार्ज आ गया। डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है AF1 मल्टीप्लाई VF1, या और इसका एक और फॉर्मूला, इसका एरिया फ्लो का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। उसका डायमीटर D नोट भी रखा था, D हब का भी डायमीटर देखा हुआ था। तो हमने यहाँ से AF1 निकाल लिया। AF1 निकल के आएगा, तो ये AF1 निकल के जो आएगा उसमें हम पुट कर देंगे यहाँ पे डिस्चार्ज में, यहाँ से VF1 आ जाएगा। क्लियर, कोई रॉकेट साइंस की वाली बात नहीं हुई है। यहाँ से VF1 आ गया, VF1 इक्वल टू VF2, ये केपलर की मतलब हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है। अब VF1 आ गया तो हम इनलेट एंगल पे रख देंगे। वहां से ये हम यहाँ से हम निकाल लेंगे VW1 10 अल्फा लगा के, VF1 अपॉन VW1 हमने यहाँ से निकाल लिया। VW1 हमने पता नहीं है, ओके। तो अल्फा तो हमें पता है, पर अल्फा उन्होंने गिवन में दे रखा 35, यहाँ से VW1 आ गया, ओके। इसका उसके अंदर वाले ट्राइंगल में हम एक और ये लगाएंगे, ठीक है। और जो VW1 आया, मैंने आपको बताया था, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। यहाँ से U यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, हमें यहाँ से U मिल जाएगा। U मिल गया, U से हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। इसका हमें अंदर का एंगल, जो इनलेट का जो दो एक यहाँ बनेगा थीटा, ये निकल जाएगा हमसे, ओके, ठीक है। हमें यहाँ से एंगल आ जाएगा और इसकी फिर स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता ही है, U इज इक्वल टू पाई N D/60। पाई हमें पता है, N निकालना है हमें। U हमने पर निकाल लिया, D हमें पता है, बस यहाँ से N आ जाएगा। यही हमने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। N आएगा 66.62 RPM, दैट्स इज। Hello, my name is Vignesh and my roll number is 2K20 ME179. So my topic is variants of propeller turbines. So in propeller turbines there are various types like tubular turbines, bulb turbines, rim type turbine, derise turbine, and for very low heads and high discharge, Kaplan turbine installation involves very costly investment. So for that, to tackle that, tubular turbine is one such successful alternative system. It has been modified, such as like the scroll case has been dispensed within the axial flow fixture, and the runner is placed directly in the main water conduit itself while the scroll case is absent. The guide vanes are provided. These are mounted on turbine housing and are connected to the water conduit. The water conduit is called the tube. The mounting of the turbine is generally horizontal. It could be in inclined position also, as per our needs. The generator is provided outside the tube. The number of bends in the conduit is minimized, and the bends are smoothened to decrease hydraulic losses. The runners are of propeller type and with fixed or to minimum or to variable pitch, like the Kaplan turbine. The wicket gates are adjustable, and hence
single or dual type of control is adopted depending on the type of the propeller. The tubular turbines has the efficiency a little bit more efficiency, like 2% larger than vertical propeller turbine of the same size. This is due to less hydraulic losses in the passageway. When the generator is situated outside the tubular turbine, the it is in the shape of an alphabet S, so it's also called the S turbine. The various salient features of the tubular turbine are the head range is 2 to 30 meter, specific speed is 500 to 1100, and maximum speed is 80 megawatts. The salient features of the bulb turbines are head range can be up to 2 to 30 meters, specific speed from 500 to 1100, maximum power 880 megawatts. The key advantages of the bulb turbine can be summarized. The bulb turbines are usually the most efficient solution for low heads of 2 to 30 meters. Bulb units have almost replaced the Kaplan turbines for low head situations. Reduced size, cost, and civil work requirement, low investment up to 25%, primarily due to the straight water passage in the draft view that improves the hydraulic behavior of the bulb unit, and also the results in low need of excavation digging. Bulb turbines could be designed to operate in both flow direction for tidal and plant explosion. Gives an edge over other turbines. While the bulb turbines are generally preferred for small hydro plants with capacities up to 10 megawatt, there are many instances for uses in higher capacity plants of up to 75 megawatts also. So the second type of turbine is the bulb turbine. This is the variation of a tubular turbine wherein the generator is kept inside the tube. The bulb is provided upstream of the propeller blades, and the generator is housed inside the bulb. The bulb is made watertight, and the houses that the generator as well as the bearings of the turbine are kept in. The bulb is air cooled, and with the air inside the bulb being pressurized to about 2 atm. There is considerable saving in space and civil works and the investment required for this arrangement. The efficiency is also high due to minimization of conduit losses. The vanes are adjustable through a ring mechanism as in the Francis or the Kaplan turbines. The bulb is supported by stay supports and connected to the tube. The support on the top of the bulb acts as access to the generator further. Bulb turbines have improved efficiency of about 2% over vertical equivalent propeller unit and 1% over an equivalent tubular turbine. This is possible due to straight passages and streamlined water flow past the runner. For very low heads, the generator speeds may be increased by the means of gear arrangements. So the third variation of the turbines are the rim type / star turbine. The rim type turbine is another variation of the tubular turbine, just like the bulb turbine, with patented generator and mechanism. Generator rotor is mounted on the periphery of the turbine runner itself. This type of turbine is also called Straflow and has been found to be suitable for the small installation of 1 to 2 megawatts under 80 to 10 meter of head. The performance characteristics of rim type turbines are similar to that of the bulb turbine, the one we did previously. These turbines are available with or without wicket gates. So after the rim type or star flow turbine, we have Derice turbine. The Derice turbine is a reaction turbine named after its inventor, Paul Derice, who patented this device in 1947. This turbine can be described as diagonal, double, regulated, mixed flow, adjustable blade reaction turbine. It is mixed flow turbine like the Francis turbine, but has propellers with adjustable pitch like a Kaplan turbine. In addition, the blade axis is not normal to the hub as in Kaplan turbine, but is inclined to the axis of the shaft. In the Rice turbine, the flow enters from a scroll case through guide vanes or at an angle of the axis of the turbine shaft. It reacts with the blades of the turbine and leaves the runner axially. The blades are set at an acute angle to the axis of the turbine. The range of the angle between 30 to 60 degree. High values of the angle are used for lower values of design heads, and correspondingly low values of theta angle are used for higher design heads. Like the Kaplan turbine, the blades of the Derice turbine are set to
to reiterate about the blade axis. The mechanism for pitch adjustment is similar to are located inside the hub. This ability to vary the pitch blade enables this two turbine to have a high part load efficiency when compared to an equivalent Francis turbine. A special feature of Derice turbine is that machine can work both as a turbine as well as such machines that work as a pump as well as a turbine are known as reversible pump turbines. The governing mechanism is of dual type as in the Kaplan turbine. The governor has two sets of adjusting arm, one for the pump operation and another for the turbine operation, which ensures optimal cam relation between blades and the wicket gates. The Derice turbine occupies a slot which has a large overlap with the Francis and the Kaplan turbines. Further, this turbine could be operated as a pump also, hence it has a large adoption in the storage hydroelectric schemes. The efficiency of Derice is well over 85%, while that of the Francis turbine is considerably less, except at the rated capacity. The other advantages of Derice turbine can be listed as smooth and efficient operation techniques over a wide range of head and load, uniform distribution of pressure and load across the blades, very good cavitation performance leading to freedom from cavitation problems over the entire operating range. Compared to an equivalent Kaplan turbine, Derice turbines are more challenged to design and manufacture. Consequently, they are more expensive. The range of salient characteristics of Derice turbines are: maximum capacity can be from 1 is approximately equal to 150 megawatts. Head range from 25 to 200 meters. Speed is equal to 90 to 300 rpm. Specific speed is 130 to 40 450. Efficiency 90 to 94%. Run diameter 1 to 5 meter. Head variation 130 to 60. Thank you. Hi, my name is Pankaj C and my roll number is 2K20 ME180. And as my friend before me explained, we are explaining chapter 3, that is Kaplan turbines, and my topics are cavitation and draft tubes. So coming to cavitation, as we know that Kaplan turbines are high speed and low head turbines. So what happens is that in the conduit of the turbine, the velocity of water inside is pretty high. So it leads to the creation of it leads to opportunities of creation of high local velocities and vacuum pressures. So when the local negative pressure equals the vapor pressure of the water, the water vapor evaporates, and it leads to the creation of a bubble. So this process is similar to boiling, and so now we have this bubble inside the turbine, and millions of these take place when cavitation happens, and I'm talking only about a single one. So when this bubble, as we know, inside is vacuum, so when it travels inside to higher pressure zones inside the turbine, it is compressed, a lot of pressure is applied on it, so it becomes smaller and smaller, and at one point it collapses. So it is like it implodes internally. So that is what happens here. So according to the textbook definition, this process of formation, travel and collapse of vapor bubbles in negative pressure zones of a liquid is called cavitation. Now, cavitation is not a good process in terms of the working of the turbine. It has a very negative impact on it, and there are various ways in which you can identify that cavitation is taking place. Some of them are, if there is a milky appearance of water coming out of the turbine, it means that there is cavitation going on inside. If the turbine is vibrating and a lot of sound is coming out of it, then also it means that cavitation is taking place. Another phenomena that I would like to discuss is pitting. So pitting is the consequence of cavitation. What happens is that so as I said, when the bubble collapses, it implodes internally. So there is the formation of microjets. So microjets are, the water traveling very quickly, very small, in small areas. So what is pitting is that when these bubbles collapse near the wall of the turbine, so it hits the walls of the turbine, and sometimes other parts like the blades of the impeller or anything else. So when it hits it, like its process is similar to hammering.
So it has a very negative impact on the life and the sustainability of the components, and it decreases its life. So yes, all these are the negative impacts of cavitation on a turbine, and it should be avoided as best as possible. And it has the predictability of it happening in Kaplan turbines is pretty high due to the high velocity of water inside the turbine. Coming to draft tubes. Draft tubes are very important components of a turbine, especially in the case of low head installations such as the one we are discussing. One of the main functions of the draft tube is that it allows the turbine to be placed above the tailwater surface. The other function is that it diverts the water flow from vertical to horizontal. And coming to the third and I think the most important function of the draft tube is that it prevents the backflow of water into the turbine. So what happens in Kaplan turbines is that the velocity of water inside the turbine is pretty high. As found by researchers, the velocity of water that is exiting the turbine from the runner is found to be as high as 50% of the initial energy of water that entered the turbine. 50%. So the kinetic energy of water is pretty high. So sometimes what happens is that the pressure head might get reduced due to the high kinetic head of the water. So sometimes the pressure at the exit of the runner becomes less than the atmospheric pressure. So when this happens, so the water starts flowing back into the turbine. So this is extremely disastrous for the turbine, and it stops working. So this has to be prevented at all costs. So from at the exit of the runner, a draft tube is attached to solve this problem. So what the draft tube does is that it connects to the runner, and slowly its area increases. So as we know, flow rate is equal to AV1. We are increasing the area so that the velocity gets decreased, and this is how we recover the kinetic energy of the water that is exiting the turbine, and we try to convert it to the pressure head so that when the water exits the draft tube, it is either equal to the atmospheric pressure or maybe slightly higher than that, so that it doesn't flow back into the turbine. This is one of the most important use of the draft tube. Yeah, so coming to a little bit of formulae, I'd like to discuss the head loss HL. HL is equal to K, which is a coefficient which is generally of the order of 0.3. So K times V1 square minus V2 square upon with 2G. So where V1 is the velocity of water at the start of the draft tube, and V2 is the velocity of water at the end of the draft tube. So this is the head loss. And coming to the efficiency of the draft tube, some authors define it as the ratio of regain of pressure head to the velocity energy at entrance of draft tube. So the regain of pressure head throughout the draft tube divided by the velocity energy at entrance of draft tube. So its formula is 1 minus HL upon V1 square minus V2 square upon with 2G. Since HL is equal to K times the same value, that is V1 square minus V2 square upon with 2G upon with V1 square minus V2 square upon with 2G, they get cancelled, and we get 1 minus K as the formula for the efficiency of a draft tube. So this is it. Thank you.